Closing in on terror network, Peshawar mosque bomber was in police uniform, says KPIG. Dawn News. Khyber Pakhtunkhwa Police Chief Moazzam Jah Ansari said on Thursday that the police was closing in on the terror network behind the suicide attack on a mosque in the Peshawar police lines area, revealing that the bomber was clad in a police uniform. On January 30th, a powerful explosion ripped through a mosque in Peshawar's red zone area where between 300 and 400 people, mostly police officers, had gathered for prayers. The suicide blast blew away the wall of the prayer hall and an inner roof and claimed 101 lives. The outlawed Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP, claimed responsibility for the attack. It later distanced itself from it, but sources earlier indicated that it might have been the handiwork of some local faction of the outlawed group. Talking about the status of the investigation in an impassioned presser today in which he referred to police personnel as his children, Ansari said that the police had found ball bearings from the blast site. "We found ball bearings used in a suicide jacket from underneath the rubble of the mosque yesterday. What we know so far. Suicide bomber wore police uniform and entered police lines on motorcycle. Police guards didn't check him because they thought he was one of their own. 12 to 16 kilograms of TNT was used in the blast. Combination of explosive and pillarless building contributed to high toll. Body count could be revised as there is possibility of duplication in lists." FO spokesperson says Pakistan expects cooperation from Afghan interim government in blast probe. China says willing to deepen counter-terror cooperation with Pakistan. "This was a suicide bomber and we have traced him. We have obtained the CCTV footage of his movement from Khyber Road to the police lines, then how he parked his motorcycle on a side. He was in a police uniform and was wearing a mask and a helmet," the officer revealed. He also confirmed that the severed head that the police found from the blast site was of the attacker. Ansari said that policemen at the entrance of the police lines failed to check the attacker because they thought he was their own. At 12:37 p.m., the attacker, entered the main gate on a motorcycle, came inside, talked to a constable and asked him where the mosque was. This means that the attacker was not aware of the area. He was given a target and there is an entire network behind him. He was not a lone wolf, Ansari said. He went on to say that the police have traced the attacker's motorcycle as well. "Investigation is a process that will require time. We are doing it diligently, but it will require some patience." At one point during the press conference, Ansari revealed that 10 to 12 kilograms of TNT, a high explosive, was used in the blast. The combination of the explosive and the aging building contributed to high death toll. "In trinitrotoluene blasts, the shockwaves have no space to go anywhere," he said, adding that this was the reason for the large number of casualties. The 50-year-old mosque at the Peshawar police lines did not have pillars, so when the bomb exploded, the walls and roof caved in. "My children, the people inside the mosque, were trapped under the rubble for hours." He added that the police could have cleaned up the debris within 2 hours with heavy machinery, but they didn't do so. "This is why there are people who are still breathing in the hospital today." The IG also said that the total death toll of martyrs was being reviewed by the police because of duplicated lists. "We will give you the exact number of martyrs after eliminating all duplication, and it will be done in a scientific way. We'll avenge each and every death." At the onset of his presser, the police chief asserted that there would be a reckoning for each and every martyr. "Both I and my police team are in immense grief right now. People believe that we wear uniforms, but we are also humans who have children and families. We are all in grief," he said. The official said that this was a time of distress for the police and the force needed the nation to provide them with a healing touch. Ansari stated that the police had raised voices against the attack to take revenge for each and every martyr, adding that the sacrifices of the policemen would not go in vain. "We fight for you and we will fight for ourselves," he added. Conspiracy theories. The police chief also said that conspiracy theories were being made to incite my children, policemen, lead them astray and bring them to the streets. Ansari was referring to the protest staged by policemen across KP yesterday,
in a first-of-its-kind move, who chanted slogans against unidentified people. According to a Dawn report, policemen in Peshawar, Swabi, Malakand and other areas of the province took to the streets on Wednesday and chanted slogans for peace. They demanded an independent investigation into the blast in the mosque at the police lines in Peshawar. The protesting policemen said that their protest was against the system and they were compelled to take to the streets owing to the deteriorating law and order situation in the province and seek justice for the victims of terrorist attacks. Talking about the protest in his media talk today, the KPIG said, "We were still burying our dead when another storm brewed. My children were led astray and they started demanding protection." Ansari said that if the officers, who had been trained to fight back, started talking about protection, then who would protect the country? This was the doing of a few misled people, who had their own agenda and had to create an issue and make headlines on the media, he added. "I don't want to take any names, but please stop hurting us, do not hit us, do not present conspiracy theories, let us investigate and let us decide and we will present everything, whatever happened." The IG also said that he had talked to my children and told them that their duty was to find the terrorists and not protest. "There are losses in every battle, both on our side and theirs." He recalled that when he talked to his police force today, he took an oath of fighting against terrorism till his last breath and each and every officer followed him. "They all stood up when I asked who was ready to fight," Ansari said, asserting that there was no unrest in the police force. Investigating Jamaat-ul-Ahrar angle. In response to a question, Ansari said that technical evidence and information collected by sensitive institutions suggested that the blast was the work of TTP's Jamaat-ul-Ahrar faction. The TTP claimed responsibility for the blast, for which the reasons are clear. But then they disowned it. "It seems that they consulted among the group and realized that they will be criticized for attacking a mosque," he said. But, the IG continued, "We can clearly say through all the evidence that Jamaat-ul-Ahrar, TTP, and a hostile intelligence agency working against the national security of Pakistan is behind it. We know the people responsible for it, we know the handlers and the operators as well," he said. Pakistan expects cooperation from Afghan interim government, FO. Separately, in a weekly press briefing on Thursday, Foreign Office spokesperson Mumtaz Zahra Baloch expressed grief over the loss of innocent lives in the Peshawar suicide blast. She said that the government had begun investigations into the Peshawar suicide attack. In response to a question, she said that Pakistan expected cooperation from the Afghan interim government in the probe. Terrorism is a common threat to Pakistan and Afghanistan. "We hope that the interim Afghan government will fulfill its promises to the international community," Zahra said, and hoped that no country will allow its soil to be used for terrorism in Pakistan. China willing to deepen counter-terror cooperation with Pakistan. Meanwhile, in separate phone calls with Prime Minister Shehbaz Sharif today, Chinese President Xi Jinping and Premier Li Keqiang said China was willing to deepen counter-terrorism cooperation with Pakistan. They condemned the Peshawar police line's mosque bombing and extended condolences to the bereaved families over the loss of their loved ones. China resolutely opposes all forms of terrorism and is willing to deepen counter-terrorism cooperation with Pakistan to jointly maintain peace and security in the region and globe, the Chinese president and the premier said. With additional input from AP and Naveed Siddiqui. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@DawnVocabulary. पेशावर में मस्जिद पर हमला करने वाला पुलिस की वर्दी में था, आईजी खैबर पख्तूनख्वा। डॉन न्यूज़। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबराह मुअज़्ज़म जाह अंसारी ने जुमेरात के रोज़ कहा कि पुलिस पेशावर पुलिस लाइंस के इलाके में एक मस्जिद पर होने वाले खुदकुश हमले के पीछे मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क को बंद कर रही है। 30 जनवरी को पेशावर के रेड जोन इलाके में एक मस्जिद में एक ताकतवर धमाका हुआ था, जहां 300 से 400 अफराद नमाज के लिए जमा हुए थे, जिनमें ज्यादातर पुलिस एहलकार थे।
खुदकश धमाके में नमाज हाल की दीवार और अंदरूनी छत तबाह हो गई थी और 101 अफराद हलाक हो गए थे। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। बाद में उसने खुद को इससे दूर कर लिया, लेकिन ज़राए ने पहले इशारा दिया था कि यह कालादम ग्रुप के किसी मकामी धड़े का काम हो सकता है। अंसारी ने आज एक पुरजोश प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफ्तीश की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए कहा कि पुलिस को धमाके की जगह से बाल बैरन मिले हैं। हमने कल मस्जिद के मलबे के नीचे से खुदकुश जैकेट में इस्तेमाल होने वाले बाल बीरिंग्स बांधे। हम अब तक क्या जानते हैं? खुदकुश हमला आवर पुलिस की वर्दी पहनकर मोटरसाइकिल पर पुलिस लाइंस में दाखिल हुआ। पुलिस गार्ड्स ने इसकी जांच नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि वो उनका अपना एक रहे। धमाके में 12 से 16 किलोग्राम TNT इस्तेमाल किया गया। धमाका खेज मवाद और बगैर सुतून की इमारत के इम्तिजाज ने ज्यादा तादाद में इजाफा किया। बॉडी गिनती पर नजरसानी की जा सकती है क्योंकि फहरिस्तों में नकल का इम्कान है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान धमाके की तहकीकात में अफगान अबूरी हुकूमत से ताउन का ख्वाहा है। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने का ख्वाहा। ये एक खुदकुश बमबार था और हमने इसका सुराग लगा लिया है। हमने खैबर रोड से पुलिस लाइंस तक उनकी नकलो हरकत की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। फिर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की। वो पुलिस की वर्दी में थे और मास्क और हेलमेट पहने हुए थे। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि पुलिस को धमाके की जगह से जो कटा हुआ सर मिला वो हमला आवर का था। अंसारी ने कहा कि पुलिस लाइन के दाखिली दरवाजे पर मौजूद पुलिस एहलकार हमला आवर को रोकने में नाकाम रहे क्योंकि उन्हें लगा कि वो उनका अपना है। उन्होंने कहा, दोपहर 12:37 बजे वो हमला आवर मोटरसाइकिल पर मेन गेट में दाखिल हुआ, अंदर आया, एक कांस्टेबल से बात की और इससे पूछा कि मस्जिद कहाँ है। इसका मतलब यह है कि हमला आवर को इलाके के बारे में इल्म नहीं था। इसे एक हदफ दिया गया था और उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है। वो अकेला भेड़िया नहीं था, अंसारी ने कहा। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने हमला आवर की मोटरसाइकिल का भी सुराग लगा लिया है। उन्होंने कहा कि तहकीकात एक ऐसा अमल है जिसमें वक्त दरकार होता है। हम उसे पूरी तंदही से कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सब्र की जरूरत होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मौका पर अंसारी ने इंकिशाफ किया कि धमाके में 10-12 किलोग्राम TNT का इस्तेमाल किया गया था। धमाका खेज मवाद और पुरानी इमारत के इम्तिजाज ने हलाकतों की तादाद में इजाफा किया। उनका कहना था कि ट्राई नाइट्रोटोलोएं धमाकों में सदमे की लहरों के लिए कहीं जाने की गुंजाइश नहीं होती। उन्होंने मजीद कहा कि बड़ी तादाद में हलाकतों की यही वजह है। उन्होंने कहा कि पेशावर पुलिस लाइंस की 50 साल पुरानी मस्जिद में सुतून नहीं थे। चुनांचे जब बम फटा तो दीवारें और छत गिर गई। मेरे बच्चे, मस्जिद के अंदर मौजूद लोग घंटों तक मलबे तले दबे रहे। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस भारी मशीनरी की मदद से 2 घंटे के अंदर मलबे को साफ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही वजह है कि ऐसे लोग हैं जो आज भी अस्पताल में सांस ले रहे हैं। IG ने यह भी कहा कि पुलिस नकली फहरिस्तों की वजह से शुहदा की कल हलाकतों का जायजा ले रही है। उन्होंने कहा कि हम आपको तमाम नकलोहे को खत्म करने के बाद शहीदों की सही तादाद बताएंगे और ये साइंसी अंदाज में किया जाएगा। हर मौत का बदला लेंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में पुलिस चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि हर शहीद का हिसाब होगा। उन्होंने कहा, मैं और मेरी पुलिस टीम दोनों इस वक्त इंतहाई गम में हैं। लोगों का मानना है कि हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन हम इंसान भी हैं जिनके बच्चे और खानदान हैं। हम सब गम में हैं, उन्होंने कहा। ओहदेदार ने कहा कि यह पुलिस के लिए परेशानी का वक्त था और फोर्स को कौम की जरूरत थी वो उन्हें शिफा बख्श टच फराहम करे। अंसारी ने कहा कि पुलिस ने हर शहीद का बदला लेने के लिए हमले के खिलाफ आवाज उठाई थी और पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम आपके लिए लड़ते हैं और हम अपने लिए लड़ेंगे। साजिशी नजरियात। पुलिस चीफ ने यह भी कहा कि मेरे बच्चों, पुलिस एहलकारों को उकसाने, उन्हें गुमराह करने और उन्हें सड़कों पर लाने के लिए साजिशी नजरियात बनाए जा रहे हैं। अंसारी कल के पी भर में पुलिस एहलकारों की जानिब से किए गए एहतजाज का हवाला दे रहे थे, जो अपनी नौयत का पहला कदम था,
जिन्होंने नामालूम अफराद के खिलाफ नारेबाजी की थी। डान की रिपोर्ट के मुताबिक बुध के रोज पेशावर, सवाबी, मालाकंड और सूबे के दीगर इलाकों में पुलिस एहलकार सड़कों पर निकल आए और अमन के लिए नारेबाजी की। उन्होंने मुतालबा किया कि पेशावर में पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले धमाके की आज़ादाना तहकीकात की जाए। एहतजाज करने वाले पुलिस एहलकारों का कहना था कि उनका एहतजाज निज़ाम के खिलाफ है और वो सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से सड़कों पर निकलने पर मजबूर हैं और दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। अपने मीडिया टॉक में एहतजाज के बारे में बात करते हुए KP के IG ने कहा, हम अभी अपनी लाशों को दफन कर रहे थे कि एक और तूफान आया। मेरे बच्चों को गुमराह कर दिया गया और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करना शुरू कर दिया। अंसारी ने कहा कि अगर लड़ने की तरबियत याफ्ता अफसरान तहफ़्फ़ुज़ की बात करने लगे तो मुल्क की हिफाजत कौन करेगा। उन्होंने मजीद कहा, ये कुछ गुमराह लोगों का काम था जिनका अपना एजेंडा था और उन्हें एक मसला पैदा करना था और मीडिया पर सुर्खियां बनाना था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बरा मेहरबानी हमें तकलीफ पहुंचाना बंद करें, हमें ना मारें, साजिशी नजरियात पेश न करें, हमें तहकीकात करने दें और फैसला करने दें और जो कुछ भी हुआ हम सब कुछ पेश करेंगे। IG ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने बच्चों से बात की थी और उन्हें बताया था कि उनका काम दहशतगर्दों को तलाश करना है, न कि एहतजाज करना। हर लड़ाई में नुकसान होता है, हमारी और इन दोनों की तरफ से। उन्होंने याद दिलाया कि आज जब उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स से बात की तो उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का हल्फ लिया और हर अफसर ने उनका ताक़ुब किया। अंसारी ने कहा, जब मैंने पूछा कि कौन लड़ने के लिए तैयार है तो वो सभी खड़े हो गए। जमात अल-अहरार के ज़ाविये से तहक़ीक़ात। एक सवाल के जवाब में अंसारी ने कहा कि तकनीकी शवाहिद और हसास इदारों की जानिब से जमा की गई मालूमात से पता चलता है कि धमाका TTP के जमात अल-अहरार धड़े का काम था। उन्होंने कहा कि TTP ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसकी वजूहात वाज़ेह है, लेकिन फिर उन्होंने इससे इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि उन्होंने ग्रुप के दरमियान मशावरत की और महसूस किया कि एक मस्जिद पर हमला करने पर उन पर तनखीद की जाएगी। ताहम IG ने मजीद कहा, हम तमाम शवाहिद के जरिए वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि जमात अल-अहरार, TTP और पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ काम करने वाली एक दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी इसके पीछे है। उन्होंने कहा, हम इसके जिम्मेदार लोगों को जानते हैं, हम हैंडलर्स और ऑपरेटर्स को भी जानते हैं। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से ताउन की तवक्को रखता है। दफ्तर खारजा। जुमेरात को हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज ज़ोहरा बलोच ने पेशावर खुदकुश धमाके में मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पेशावर खुदकुश हमले की तहकीकात शुरू कर दी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहकीकात में अफगान अबूरी हुकूमत से ताउन की तवक्को रखता है। दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए मुश्तरका खतरा है। ज़ोहरा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अबूरी अफगान हुकूमत बैन अल-अक़वामी बरादरी से किए गए अपने वादों को पूरा करेगी और उम्मीद है कि कोई भी मुल्क अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने का ख्वाह। दरीं असना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचियान ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। उन्होंने पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद बम धमाके की मजम्मत की और सोगवार खानदानों से उनके प्यारों के इंतकाल पर तज़ियत का इजहार किया। चीनी सदर और वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है और खित्ते और दुनिया में मुश्तरका तौर पर अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को गहरा करने का ख्वाह है। APP और नवीद सिद्दीकी से इजाफी इनपुट के साथ। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.